फैशन के रंग, दिल्ली में आर्ट लवर्स का नया ठिकाना और ऋतिक के किस पर मची किचकिच, ये सब और बहुत कुछ लेकर मैं फिनाज हाजिर हूं आपके सामने दिल्ली मस्ती का एक और रॉकिंग एपिसोड। विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक के मिसिंग डिजाइनर सिद्धार्थ टाइटलर ने अपनी स्प्रिंग समर 2010 कलेक्शन शोकेस की और मिलाया इस फैशन की रात को गोल्फ के साथ। कैसे, चलिए खुद उनसे और उनकी शो स्टॉपर नेहा धूपिया से जानते हैं। Siddharth Titler's 2010 Spring Summer Collection and Neha Dhupia being the showstopper. It's been great. Yeah, it's really exciting. It's just fantastic to be a part of the Signature Club Golf Championship. It sort of also brings the bold and the beautiful together. Beautiful with Siddharth's collection, bold because they've taken lots of big steps to make the sport even more interesting than it already is. And yeah, and they've got me, so I fit in somewhere. Alright, Siddharth, आप बताइए इस बार Wills Lifestyle India Fashion Week में आपने participate in the first time we didn't see you there. Because I was invited to do Dubai Fashion Week and it was an opportunity I didn't want to miss. So I chose Dubai and the dates were exactly the same, so I couldn't do both. ऑलराइट, नेहा बताइए, धीरे धीरे गोल्फ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो गोल्फ के लिए आउटफिट्स लेके आते हैं टू मेक द गेम बेटर, यू नो, देयर स्पेशल शर्ट्स दैट आर मेड सो दैट द स्विंग इज़ बेटर। तो आपके हिसाब से व्हाट यू हैव टू से ऑन गोल्फ एंड फैशन? Well, I think it's great for me. I think of it in a very different mindset कि cricket के अलावा भी हम किसी और sport के बारे में बात करते हैं. And I'm somebody who's very interested in watching sport, and you know, maybe I don't know everything about every sport, but yes, when I get time, I do watch a little bit of soccer, a little bit of golf, a little bit of you know, cricket, or tennis. It's always a mix. But there's a lot of interest that people have taken towards golf also because क्योंकि बहुत जैसे कहते हैं कि अहम लोग ये स्पोर्ट को खेलते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनीवन, इट्स नॉट लाइक you know, anyone and everyone gets up and plays. It is, we have to come to terms with it, and we have to admit that it is a club sport. It is a little more elitist, and that's why there's a lot of people who pay attention to the sport, and people try and bring out newer things as far as the sport is concerned. And I guess that's where the attention comes from as well, and they think that they can invest a lot of time, money and effort in the sport because it is something that you know, like I said, I would use the word club for it. It's very club culture. दिल्ली मस्ती में वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक।